Welcome back, dear students. We are discussing chapter 20 of the Penal Code, which is related to offences relating to marriage. In the previous lecture, we were discussing sections 494 and 495. Today, the topic of discussion is 497, that is adultery. We'll start this discussion with the statement and the fact, rather, that adultery as a law is now a history in India after the judgment of Joseph Shine versus Union of India. But for the purpose of academic understanding and as a part of syllabus, we will discuss the law as it stood earlier and the catena of judgments which traversed through various ratios and judgments of the case from Yusuf Abdulaziz in 1954 to lately in the judgment of Joseph Shine in 2018, which finally decriminalized 497 and declared it unconstitutional, and finally it was struck down from the statute or rule book. तो हम 497 को डिस्कस कर रहे हैं जो अडल्ट्री है. पहले हम बेयर प्रोविजन देख लेंगे कि इसकी ड्राफ्टिंग क्या थी और हम हर वक्त ये जहन में रखेंगे डिस्कशन के दौरान अब ये लॉ नहीं है, इट्स जस्ट अ हिस्ट्री, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये. अडल्ट्री की डेफिनेशन, इट वाज नॉट जेंडर न्यूट्रल. अगर आप देखेंगे विक्टिम जो है आइडेंटिफाइड है एंड वो हस्बैंड है, और परपेट्रेटर वो भी आइडेंटिफाइड है, वो हमेशा वाइफ होगी ऑफ दैट पर्सन अलॉन्ग विद एनी अदर पर्सन, बट वाइफ को एक्सेप्शन के ज़रिए से बचा लिया गया था. पहले हम बेयर रीडिंग लगा लेते हैं, फिर थोड़ा इसको इलस्ट्रेशन से अच्छी तरह समझ लेते हैं. Whoever has sexual intercourse with a person who is, so first thing is जो accused है, अभी इसे whoever वर्ड से लग रहा है कि वो जेंडर साइलेंट है या जेंडर न्यूट्रल है, बट आगे ये कंफर्म हो जाएगा. वी आर टॉकिंग अबाउट मेल ओनली. whoever has sexual intercourse with a person who is a male, जिसको हम अडल्टरर कहेंगे यहाँ पे, has sexual intercourse with another person. This was another drafting error in this, जबकि आइडेंटिफाई ही कर दिया कि दूसरा जो है वो वुमन होगी और वाइफ होगी रादर किसी और पर्सन की. सो यूज ऑफ वर्ड पर्सन वाज नॉट अप्रोप्रिएट, इसको यहाँ पे सीधे यूज करना चाहिए था वुमन. Anyways, हम अब this is a history, उसमें नहीं जाएंगे, but whoever has sexual intercourse with a person who is, and such person is, yeah, that person, another person. Number two, that other person, we are talking about this person is, what is she is the wife of another, ये आगे provision से पता चल जाएगा. And number three, this adulterer knows this fact, knows number two, or if he does not know, he has a reason to believe. मेंजरिया के पॉइंट पे ये लॉ बहुत अच्छा था, बट एक्टस रियस में इसके डिफेक्ट था. मेंजरिया में कोई मसला नहीं था. So adulterer knows or has reason to believe that number two, that other person is wife of another man, and he has this sexual intercourse. Number four, such sexual intercourse was without the consent or connivance of the husband of that other person, और हम यहाँ two लिख देंगे, two. And number five,
कंसेंट से कंपाउंड हो जाता था एंड द सेक्सुअल इंटरकोर्स मस्ट नॉट amount to rape. So this section intended to punish those cases of sexual intercourse जो कि रेप के परव्यू से बाहर रह जाते थे 376 375 rather definition में नहीं फॉल करते थे. So let's look at the bare provisions. आप अपने bare act की तरफ देख सकते हैं. I think this is all about ये 5 ingredients होने चाहिए. Whoever has sexual intercourse with a person who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of any other person, any other man rather, without the consent or connivance of that man, husband, that is husband. Such sexual intercourse not amounting to the offense of rape is adultery. And इस हालत में जो punishment थी it was 5 years or fine or both. अब डेफिनेशन क्लियर हो गई. अभी इसको इलस्ट्रेशन से समझ लेंगे बट कुछ कीवर्ड्स हैं उन पे ध्यान देना ज़रूरी है. कि पहली बात तो ये है कि whoever has sexual intercourse में in that case I would say drafting में तो इसका ख्याल नहीं रखा गया है. But when we say sexual intercourse in the archaic terms, we meant male only. But ये इस मामले में it was a gender neutral. It would have इसके scope से female बाहर नहीं रह सकती थी as an adulterer. I think so because whoever has sexual intercourse with a person यहाँ ये identified है, she's gender feminine है और फिर she is that other person must be wife of another. और इसको या तो knowledge थी, he had knowledge or reason to believe that such person is the wife of another, and such act of sexual intercourse was done without the consent. और consent आप समझते हैं, consent हम लोग समझते हैं section 90 and other sections qualify the word consent. और connivance की definition कहीं नहीं है. Connivance usually एक grammatical sense में एक ऐसा word है जहाँ agreement between two persons or consent about a particular act, but usually that act is immoral or illegal. So it's a negative word of connivance of the husband. So ये एक बहुत अजीब चीज़ थी कि consent जो condone करती थी sexual act को वो husband की थी, not of the wife. Or it would actually put the autonomy or liberation or liberty of a woman into the hands of the husband. तो obviously it was bound to इसमें drafting में एक basic flaw था और वो courts के सामने over the years आता रहा. उसके उस chronologically उन judgments में हम जाएंगे. 4-5 judgments हैं जिनको समझना ज़रूरी है जिनमें से finally फिर जोसेफ शाइन में इसको ख़त्म ही कर दिया, unconstitutional declare कर दिया. बट इस केस में चूंकि एक्ट दोनों ने किया, एक और फ्लॉ जो इसका था दैट एक्ट दोनों ने किया बट लॉ प्रोवाइडेड 497 itself said that in such a case wife shall not be punishable as an abettor. Although वाइफ ने उसमें पार्टिसिपेट किया एक्ट में बट शी वाज नॉट एन abettor. तो एक्टस रीज में बड़ा सीरियस प्रॉब्लम था इस. सो नाउ इस डेफिनेशन से हम थोड़ा सा इलस्ट्रेशन से आपको समझाते हैं. लुक, इन दिस सिनेरियो देयर आर 3 पार्टीज एवरी टाइम. मिनिमम 3 पार्टीज हैं. एक पार्टी है, लेट्स कॉल हिम ए, दैट इज अक्यूज्ड, यानी he is generally a male definition के हिसाब से, but I still say that whoever has sexual intercourse में whoever में feminine भी present है, so it would have been, there was no scope that was particularized or restricted to males only. So let's, for the sake of illustration, हम ये मान लेते हैं ये male था, he was accused and he committed the act of sexual intercourse with the consent of that person, that is wife, called W, another person, she is wife. इसकी तो कंसेंट थी बट इसकी कंसेंट नहीं थी. लॉ ये कह रहा था और ये हस्बैंड है, तो इसकी कंसेंट ना होने की वजह से इसका सेक्सुअल इंटरकोर्स विद दिस पर्सन इट वुड अमाउंट टू अडल्ट्री. एंड पहला जो इसमें कई डिफेक्ट्स हैं उनको हम वन बाय वन कवर कर लेते हैं. कीपिंग दिस इलस्ट्रेशन इन माइंड,
आप इसको जहन में रखते हुए अब देख सी केस बाय केस इसको ले लेंगे। प्रॉब्लम क्या था, हम इसको केस वाइज ले लेते हैं। केस 1 और इंस्टेंस 1। फर्स्ट केस वाज जो डिफेक्ट था लॉ में कि this man who is husband H, he could never be charged by wife for adultery. अपनी वाइफ उसकी अडल्ट्री के लिए उसको चार्ज ही नहीं कर सकती थी। एंड इफ ही कमिटेड सच एन एक्ट with another person who was not married at all, another person, a female who was not married at all, तो फिर ये अडल्ट्री होता ही नहीं। एंड इफ शी was married तो देन ये केस चला जाता to her husband, not to this man's wife। पहला डिफेक्ट इसमें ये था। एंड नंबर 2 इसमें था it in a way compromised the sexual autonomy। For example, इस मामले में मर्द आज़ाद था, औरत आज़ाद नहीं थी, तो sexual autonomy of woman was compromised in the sense कि it promoted in a way promiscuity, कि husband is the proprietor, वो अगर consent दे देता है ऐसा act हो सकता है, otherwise act नहीं हो सकता। और नंबर 3, वो केस नंबर 3 भी इसी जैसा है, ऑलमोस्ट 1 जैसा ही। In case this person accused this man A, in case A is married, for example this man is married, वो married भी हो सकता था, accused unmarried भी हो सकता था। In case this man is married, so his wife could not bring a charge against him, so it was a clear cut case of discrimination। अच्छा, केस 4 देख लीजिए आप। The other woman must have been the wife of another, so divorcees and widows also were left out of the scope। कि divorcees और widows जो है adultery के स्कोप से बाहर होते। और जो सबसे बड़ा डिफेक्ट इसमें था, जो लीगल jurisprudence के हिसाब से होना चाहिए, and that is it was the case of जिसे हम कहेंगे it asked or demanded a unilateral commitment to fidelity, ये एक तरफा वफादारी चाह रहा था औरत से, मर्द चाहे कितना भी बेवफा हो जाता शादी के बंधन और शादी के रिश्ते में। क्योंकि चैप्टर से ही ये टाइटल, जो चैप्टर है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज, उससे ही ये लग रहा है कि ये ऑफेंस मैरिज ही को बचाने के लिए क्रिएट किया गया था। बट इसकी क्रिएशन में ये बेसिक डिफेक्ट और लैकुनास थे जो टाइम एंड अगेन कोर्ट्स के सामने आना लाजिम था और आ ही जाता। इसीलिए फिफ्थ लॉ कमीशन ने 1971 में इसको रेकमेंड किया, और रादर 156th लॉ कमीशन रिपोर्ट जो है 156th रिपोर्ट प्रोबेबली 1997 की, और फिफ्थ लॉ कमीशन ने 1971 में रेकमेंड किया कि इसको जेंडर न्यूट्रल बना देना चाहिए। जहाँ टू बी द वाइफ ऑफ अनदर है, वहाँ वाइफ और हस्बैंड, और ड्राफ्टिंग भी सजेस्ट कि वाइफ और हस्बैंड ऑफ अनदर होना चाहिए, और ये जो एग्जेम्पशन ऑफ वुमन है एज एन अबेटर वो भी हट जाना चाहिए। बट दिस कुड नॉट सी द लाइट ऑफ डे, और ये हो नहीं पाया। सो देयर इज अ कैटेना ऑफ जजमेंट्स, रादर 5 जजमेंट्स हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो जोसेफ शाइन लेटली है। जोसेफ शाइन से पहले हम 4 जजमेंट्स को एनालाइज करेंगे। नंबर 1 इज यूसुफ अब्दुल अजीज। दिस इज द अर्लीस्ट केस ऑफ constitutional interpretation were related to 497, जहां 497 को चैलेंज किया गया। यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इट इज 1954 की जजमेंट है ये। ऑल इंडिया रिपोर्ट है 1954, सुप्रीम कोर्ट 3-1। नंबर 1
हम ब्रीफली इनका, बिकॉज इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बड़े इंपॉर्टेंट और डाइवर्स टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा डीप सीटेड नॉलेज चाहिए। सो अभी वो कॉन्स्टिट्यूशन के सेमेस्टर आना बाकी है, सो वी विल कन्फाइन आवर सेल्स टू द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के कॉन्सेप्ट जो समझ में आ सकें इस स्टेज पे। Actually, this person, Yusuf Abdul Aziz, was the appellant in this case, जिसको चार्ज किया गया था बेगैमी के लिए, सॉरी अडल्ट्री के लिए, and then he approached the Bombay High Court, और बिफोर ड्यूरिंग हिज प्रोसीडिंग्स वर पेंडिंग, उसने बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन डाल दी जिसमें ये कहा कि 497 वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 है इक्वालिटी का, और इसको एंड आर्टिकल 15 भी, इसको इनवैलिड अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट अपहेल्ड the validity and then in appeal to the Supreme Court, इससे लगता है ये सुप्रीम कोर्ट के पास आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको वैलिड करार दिया and said that it is within the wires of constitution, जिसे हम कहते हैं intra-virus, कि ये constitutionally fit provision है which is saved by 15(3) or 4 rather, yeah 15(4) जो है, जो आर्टिकल 15(4) जो डिस्क्रिमिनेशन अलाउ करता है to a certain extent in respect of women। तो इसने जजमेंट ने पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इट अपहेल्ड और ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनली 497 साउंड और वैलिड है। बट ये डिबेट यहाँ रुकनी नहीं थी, तो नेक्स्ट टाइम जो है सौमित्री विष्णु की जजमेंट में 1985 में ये अगेन चैलेंज हुआ। सौमित्री विष्णु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985। पूरी साइटेशन आप टेक्स्ट बुक्स वगैरह से देख लें, बट 1985 में है। इसमें भी एक्चुअली यही केस हुआ जो हमने केसेस देखे थे, वहाँ पे मैंने जो साइटेशन इलस्ट्रेटिव केसेस दिए थे, केस 1, केस 2, केस 3, तो उसमें जो केस 3 मैंने दिया था, जैसे कि वाइफ का अगर एग्रीव्ड है और वाइफ का हस्बैंड अडल्ट्री कर रहा, उसको वो प्रोसिक्यूट नहीं करवा सकती अंडर द लॉ। इसी को चैलेंज किया गया कि ये आर्टिकल 32 में पिटिशनर आई और ये कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगेन इट वाज चैलेंज्ड और ये कहा कि दैट अडल्टरर जो है अगर हस्बैंड हो तो उसको स्कोप से बाहर रख दिया गया है, शी कैन नॉट प्रोसिक्यूट। सो दिस इज अमाउंटिंग टू व्हाट petitioner contended a flagrant violation of Article 14. She said that it's a flagrant violation of Article 14 and amounting to gender discrimination, legislative despotism and male chauvinism. ये 3 phrases use किए गए, gender discrimination, legislative despotism and male chauvinism। लेकिन कोर्ट ने अगेन रिलाई किया यूसुफ अब्दुल अजीज पे एंड इट वाज हेल्ड वैलिड, और कोर्ट ने ये कहा कि ये फिट बैठता है कॉन्स्टिट्यूशनल वायर्स में। फॉर द थर्ड टाइम अगेन ये चैलेंज हुआ वी रिवाठी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, वी रिवाठी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। This was probably a judgment of 1988। 3 साल बाद ही फिर चैलेंज हो गया, और in which the party alleged that it is a case of romantic paternalism और paternalization, क्योंकि वुमन को एक चैटल की तरह ट्रीट किया जा रहा, कमोडिटी की तरह, और this amounts to obnoxious discrimination, क्योंकि एक पार्टी है और वो प्रोसिक्यूट की जा रही है उसकी एक्ट पे, और अनदर पार्टी सबमिशन मांग रहा है, अनकंडीशनल सबमिशन टुवर्ड्स फिडेलिटी एंड फेथफुलनेस। तो बट फॉर द फर्स्ट टाइम इसके साथ जो है प्रोसीजरल लॉ का एक प्रोविजन भी है, जिसकी तरफ मैं रेफरेंस दूंगा यहाँ पे 198 सब क्लॉज 2। ये जो सीआरपीसी है, सीआरपीसी में 198 सेक्शन में प्रोसीजर दिया गया है जो चैप्टर 20 है उसको लेकर के प्रोसिक्यूट करने का। तो कोई भी मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता इन केसेस का जो चैप्टर 20 में फॉल करते हैं, दिस इज ऑफेंस इन केस ऑफ मैरिज, जब तक कि एग्रीव्ड, वहाँ वर्ड जो यूज हुआ है वो है कि एग्रीव्ड पर्सन ना आए मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेनेंट बन के।
फिर एग्रीव्ड पर्सन की डेफिनेशन जो है 198(2) में इन रेस्पेक्ट ऑफ 497 जो दी गई थी, इट वाज प्रीटी एम्बिगुअस। एग्रीव्ड में कहा गया था एग्रीव्ड ओनली हस्बैंड शैल बी डीम्ड एग्रीव्ड इन केस ऑफ 497। सो अगेन इस प्रोसीजरल लॉ को भी चैलेंज किया गया 198(2), और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जोसेफ शाइन में भी फिर लास्टली चैलेंज हुआ, और 497 तो कंसिस्टेंटली एक थ्रेड है ही है। सो कोर्ट्स ने टू ए सर्टेन एक्सटेंट इस बात पे तो आ गए कि ये पार्टीज को सुना गया कि इसमें एक डिफेक्ट है ड्राफ्टिंग का, बट दे सेड कि इट कैन नॉट बी लेफ्ट फॉर द जुडिशरी, इट इज़ फॉर द पार्लियामेंट टू डिसाइड। एंड और ये कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन है, कोर्ट इन दिस जजमेंट ऑब्जर्व दैट इट इज़ अ केस ऑफ रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन which does not operate against the woman but it's in favor of woman। अब उसकी लॉजिक और फिलॉसफी की क्या थी वो बहुत लंबी चौड़ी है, उसमें हम नहीं जाएंगे। एंड फॉर द फोर्थ टाइम इन 2012 फिर जो जजमेंट आई डब्ल्यू कल्याणी की, इसमें इंसिडेंटली ऑल्दो कोर्ट मेरिट्स में नहीं गई 497 के, बट इसमें फिर से कोर्ट ने रिमार्क्स दिए स्टेट थ्रू इंस्पेक्टर, डब्ल्यू कल्याणी वर्सेस स्टेट थ्रू इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है ये, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस 2012। 2012 में फिर से यही हुआ, देयर वाज अ केस ऑफ मैरिज, डब्ल्यू कल्याणी वाज अग्रीव्ड वाइफ रादर, और नो दिस वाज अ हस्बैंड, और ये यूएसए में सेटल्ड था, और रहने वाला कहीं साउथ इंडिया का था। एंड इसकी शादी matrimonial site पे party, the aggrieved party met him, she alleged that matrimonial site पे इनकी first time मुलाकात हुई, फिर शादी हो गई, and after the marriage she discovered that he was living in an adulterous relationship with a woman। और जब उसको prosecution हुआ, the trial courts proceeded under 497 एंड हाई कोर्ट ने 482 जो है सीआरपीसी का, जिसे हम इनहेरेंट पावर्स कहते हैं, 482 इनहेरेंट पावर्स की जस्टिस को अपकीप करने के लिए सीआरपीसी में 482 दिया हुआ है कि हाई कोर्ट्स को इनहेरेंट पावर्स हैं, और हाई इनहेरेंट पावर्स में ये भी आता है कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स को क्वाश भी कर सकती हैं। तो इसने मांगा था कल्याणी ने क्वाशमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग्स बिकॉज ही सेड दैट ही इज हस्बैंड, और 497 में हस्बैंड को वाइफ प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती। सो बाई हाई कोर्ट तक कोई रिलीफ नहीं मिला, क्वाशमेंट नहीं हुआ, एंड देन बाय वे ऑफ अपील ही केम टू द सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच जो थी आफ्ताब अहमद एंड आफ्ताब आलम और RM लोधा की डबल जज बेंच ने उसको रिलीफ दे दिया, एंड अपील वाज अलाउड, एंड कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड कि हाई कोर्ट ने एरर किया हुआ है ये समझने में कि 497 में हस्बैंड को पार्टी बनाया गया है। एंड अगेन कोर्ट मेरिट्स में नहीं गई, बट it was alleged before the court that it was a display of strong gender bias in 497. So finally, for the last time in this landmark judgment of Joseph Shine versus Union of India, 2018 में ये जजमेंट डिसाइड हुआ, बट ये रिपोर्ट जो हुआ 2019 में हुआ SCC में, तो इसकी साइटेशन में इसलिए 2019 आएगा, वरना ये 18 की जजमेंट है, प्रोबेबली अक्टूबर में। 2019 3 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 39 पे है। ब्रीफ फैक्ट्स इस केस के ये हैं कि जोसेफ शाइन एक केरलाइट है, और उसने पिटिशन लाई अगेंस्ट चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ 497 along with 198(2) 497 IPC का और 198(2) CRPC का, जैसे कि पहले जिक्र हो चुका है। ये प्रोसीजरल लॉ है विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये हस्बैंड को कहता है एग्रीव्ड है। सो दिस वाज चैलेंज्ड, और कोर्ट के सामने पार्टी ने ये एलिज किया कि पहले कोर्ट्स ने जो ओपिनियन दिया हुआ है सौमित्री विष्णु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, कि ये कहा है कि दिस इज 15(4) जो है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें अलाउ है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है इन फेवर ऑफ वुमेन। बट पहले पार्टीज ने ये कहा था कि जिन्होंने ये चैलेंज किया था उनका कहना था कि ये
वायलेशन जो है इक्वालिटी का होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर ओनली नहीं हो सकता। तो और दूसरा उनका ये था कि 15(4) जो अलाउ करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, वो होना चाहिए बेनिफिशियल प्रोविजन, यानी और ये सिर्फ इम्यूनिटी नहीं देना चाहिए मर्द को या औरत को क्रिमिनल लायबिलिटी से, तो बेनिफिशियल होना चाहिए। सो दिस वॉज अगेन, ये भी नोटिस में लाया गया कोर्ट के कि 15(4) बेनिफिशियल प्रोविजन नहीं है, ये फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ इक्वालिटी है 497। और in the opinion also court observed that equality before the law does not only signify equal access to the law, but there shall be also equal exposure to the law. दैट इक्वल एक्सेस के साथ साथ इक्वल एक्सपोजर टू द लॉ होना चाहिए। सो यहाँ मेल जो है इक्वली एक्सपोज नहीं हो रहा है हु इज़ अ पार्टी टू द मैरिज। और बहुत सारी जजमेंट्स में, पिछली जजमेंट्स में कोर्ट्स ने ये ऑब्जर्व किया था कि मैरिज इज़ अ यूनिट, और जहाँ ये हस्बैंड एंड वाइफ एक यूनिट है और कम्युनिटी है, एंड दे आर एक्चुअली एक आउटसाइडर जो है जिसने इस रिलेशनशिप को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की बाय वे ऑफ अडल्ट्री, उसको पनिश किया जा रहा है लॉ के ज़रिए से। सो ऐसी इंटरप्रिटेशंस के ज़रिए से ये बचाया गया टिल दिस 2018। लेकिन इसमें 5 जजेस बेंच ने यूनानिमसली, जिसमें जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस खानविलकर, नरिमान और जस्टिस चंद्रचूड और इंदु मल्होत्रा ने यूनानिमसली एक जजमेंट दे दी और इसको ये कहा कि दिस इज़ violative of Article 14, 15 and 21 of the Constitution। So इसका इफेक्ट नेट में क्या हुआ वो बता रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ क्रिमिनल लॉ के एस्पेक्ट में वो समझना बस ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में एक अलग डिबेट है इसकी। तो इसमें नंबर 1 ये आउटकम आया इस जजमेंट के लिए, जजमेंट का, दैट सेक्शन 497 IPC was declared violative of Articles 14, 15 and 21 of the Constitution and was hence struck down or held unconstitutional। ये पूरा provision 497 unconstitutional हो गया, and it happened after 158 years। yes, 1860 से 2081, 158 years के बाद ये हुआ that this provision is not law anymore। Okay, 198 subclause 2 जो है, it was read down, rather is partly held unconstitutional to the effect it operated to 497। So in relation to 497 it was read down or declared unconstitutional to the extent that it operated to 497, not entire provision, पूरा नहीं। और तीसरा इफेक्ट इस जजमेंट का आया that earlier judgments with relation to 497 they were overruled। earlier judgments stand overruled। This is the discussion with related to the offense of adultery। Adultery is now a history in India and most of the nations across this Anglo-Saxon law, उन्होंने भी adultery को हटाया है। बट एक चीज़, the one take away from this judgment जो यहाँ criminal law के aspect से ज़रूरी है और इस judgment का outcome भी था, that for the purpose of civil liabilities with respect to marriage, for example dissolution of marriage है, divorce है, it is still a valid ground of divorce। क्रिमिनल लॉ ऑपरेट नहीं हो सकता इसमें, बट सिविल लॉ हो सकता है। इट्स अ वैलिड ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इन सिविल मैटर्स। अडल्ट्री कैन बी ए ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। सो सिविल मैटर्स में इसको रिटेन किया गया है, क्रिमिनल मैटर्स में ये लॉ नहीं है अब। एंड कोर्ट हेविली रिलाइड जोसेफ शाइन में ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के टॉपिक्स हैं और इनमें अभी जाना नहीं है हमें। सो हमारा डिस्कशन ये जजमेंट्स तक रिस्ट्रिक्ट रहना चाहिए। एंड द लॉ एज इट स्टैंड्स एंड लॉ प्रेजेंटली आफ्टर जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज दैट 497 has been declared ultra vires, unconstitutional and hence struck down and violative of articles 14, 15 and 21। तो अब ये लॉ नहीं है। 198 क्लॉज 2 जो है सीआरपीसी का, ये सीआरपीसी का है, इसको इट हैज़ बीन रेड डाउन टू द एक्सटेंट इट ऑपरेटेड टू 497। और पुरानी जितनी भी जजमेंट्स थी, जैसे डब्ल्यू कल्याणी थी, रेवाटी थी, सुमित्र विष्णु था, वो सारी ओवर रूल हो चुकी हैं। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ एडल्ट्री। थैंक यू वेरी मच।